Good morning, my dear student. I am Dr. Kiran Ramrao Burkar. Now today I am going to discuss about the lipid digestion and absorption. यहाँ पे हम देखेंगे कि लिपिड का डाइजेशन कैसा होता है और एब्सॉर्प्शन कैसा होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द डाइजेस्टिव प्रोसेस हैज टू ब्रेक दोज लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट into smaller droplets and enzymatically digest lipid molecules using enzyme, and that enzyme is called as a lipases. The mouth and stomach play a small role in this process, but most enzymatic digestion of lipid happens in the small intestine. ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, पर्टिकुलरली आई एम सेइंग अबाउट लिपिड. तो ये लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है? तो एंजाइम के सहारे. और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? लाइपेजेस, यानी लिपिड को ब्रेक करने, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है उसको कहते हैं लाइपेजेस. और ये लिपिड का जो डाइजेशन है वो माउथ और स्टमक में भी होता है, लेकिन कैसा होता है? वेरी स्मॉल रोल. बट most enzymatic digestion of lipid happens in small intestine. Small intestine में ज़्यादा होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माउथ में लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है. So lipid digestion in the mouth that start the process of lipid digestion. Chewing mechanically break food into smaller particles and mix them with saliva. An enzyme called lingual enzyme, and that is produced by cell on tongue. Okay, lingual means relating to the tongue, and begins some enzymatic digestion of triglyceride, cleaving individual fatty acid from glycerol बैकबोन. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि माउथ में भी डाइजेशन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड, उस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? लिंगुअल लाइपेज कहते हैं. और उसके साथ सलावा भी मिक्स होता है और थोड़ा सा लिपिड का डाइजेशन होता है यहाँ पे. अब हम देखेंगे कि लिपिड का डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है. So, in the stomach, mixing and churning help to disperse food, particles and fat molecules. Cell in the mouth produce another lipase, and that lipase is called as a gastric lipase. Gastric means relating to the stomach. That also contribute to enzymatic digestion of stomach. Enzymatic digestion of triglyceride. Lingual lipase swallowed with food and saliva also remain active in the stomach. But together, these two lipases play only minor role in the fat digestion, except in case of infant. And most enzymatic digestion happens in small intestine. यहाँ पे डाइजेशन होता है. यहाँ पे किसके सहारे डाइजेशन होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज. ये भी एक एंजाइम है, और लेकिन यहाँ पे बहुत ही माइनर और स्मॉल अमाउंट में होता है. अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है लिपिड का. सो एट द स्टमक कंटेन्स enter small intestine, and most of the dietary lipid are undigested and cluster in large droplet. Bile, which is made of liver. Okay, liver में बनता है boils. तो and store in gallbladder. और कहाँ पे store रहता है? gallbladder में store भी रहता है. So and this bile release into the
duodenum. Duodenum is the upper part of the small intestine. And the first section of the small intestine, bile salt have both hydrophobic and hydrophilic side. So they are attracted to both fat and water. This makes them effective emulsifier, meaning that makes lipid more meaning that both that is uh, they break large fat globules into the smaller droplet, and emulsification makes lipid more accessible to digestive enzyme by increase the surface area for them to act. तो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है. हमने पहले देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किसके सहारे हो रहा है कि बाइल, और वो बाइल कौन सीक्रेट करता है तो लीवर, और वो बाइल पहले स्टोर भी रहता है किसके लीवर से सीक्रेट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और वहां से निकल के वो डिओडिनम में आ जाता है और ये डाइजेशन होता है यहाँ पे. और pancreatic secrete, look at this, pancreas also secrete this with the help of the pancreatic duct. Pancreas also secrete pancreatic lipase into small intestine to the enzymatically digest triglyceride. Triglyceride are broken down to still attach and some free glycerol, cholesterol and fat soluble vitamin do not need to the enzymatically digested. This is about the lipid digestion in small intestine. Now we see here, यहाँ पे हमने देखा कि डाइजेशन कैसा होता है लिपिड का. अब हम देखेंगे कि how this lipid absorb. So the lipid absorb from the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा डाइजेशन भी होता है और एब्सॉर्प्शन भी होता है. सो द नेक्स्ट दोज प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन, आपको पता है कि फैट डाइजेशन होने के बाद उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होता है, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, कोलेस्टेरॉल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन नीड टू एंटर इनटू द सर्कुलेशन so that they can be used by cell around the body again. Bile help with this process. Bile salt cluster around the product of fat digestion to form structure, and that structure, look at this, and that structure is called as a what is that, micelles. Okay, मिसेल्स कहते हैं उसको हम. सो which help fat get close enough to the microvilli of the intestine, microvilli of the intestinal cells, so that they can be absorbed, and the product of fat digestion diffuse across the membrane of intestinal cell, and bile salt are recycled back to the more work emulsifying fat and forming this micelle. Okay, and once inside the intestinal cell, short and medium chain fatty acid, glycerol can be directly absorbed into the bloodstream. Okay, but soluble vitamin and cholesterol need help with bloodstream, but large lipid such as a long chain fatty acid, monoglyceride, fat soluble vitamin and cholesterol need help with absorption and transport to the bloodstream. Long chain fatty acid and monoglyceride resemble in triglyceride within the intestinal cell, and along with cholesterol and fat soluble vitamin are then incorporated into transport vesicle, and that transport vesicle is called as a chylomicron. What is that?
तो ये chylomicron क्या है? Chylomicron is a large structure with core of triglyceride and cholesterol and an outer membrane made up of phospholipid. Phospholipid intersperse with protein and called as apolipoprotein and cholesterol. This outer membrane makes them water soluble so that they can travel in the aqueous environment of the body. Chylomicron from small intestine travel first in lymph vessel. And then first in the lymph vessel and which is deliver them into the bloodstream. Chylomicron are one type of the lipoprotein and that is transport vesicles. You can say that this is the transport vesicle for the lipid in blood and lymph. तो यहाँ पे हुआ absorption. कैसे हुआ absorption? यहाँ पे हमने 2-3 टाइप के देखे ना. तो emulsification by the bile, then enzymatic digestion by the pancreatic lipase, and then third one is that the absorption of product of fat digestion, that is totally depends upon the size पे depend है कि fat का digestion कैसे होगा. Short and medium chain fatty acid and glycerol absorb into the blood via capillary. Okay, but long chain fatty acid and monoglycerol form into the triglyceride are transported in chylomicron into the lymph vessels. जो बड़े हैं लॉन्ग चेन है उसको वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन किससे इन chylomicron into the lymph vessel. Look at this fatty acid link to form triglyceride, and then fatty globules combine with this protein and to form a chylomicron. Okay, inside the Golgi apparatus के अंदर. And then this chylomicron are excreted from the epithelial cell, निकलता है यहाँ से, and enter a lacteal lymph. Look at this enter in a lacteal lymph capillary. Lacteal इसका मतलब ही lymph capillary. And lymph in lacteal transport chylomicron away from the intestine. Okay, in this way we see here lipid digestion and absorptions. Okay, thank you so much.